अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर पे आते हैं, इसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसमें हमने सीखना है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान किस तरह डिस्टेंस निकाल पाएंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम दो पॉइंट्स में जिनके कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उस फार्मूला को जिसके ज़रिए से हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल पाएंगे जिनके कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, तो इस फार्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो ये एक फार्मूला रहेगी हमारे लिए। तो हम पहले इस फार्मूला को डिराइव करेंगे यहाँ पे जनरली। इसके बाद इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं इन जनरल, एक है पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर इनके दरमियान हम डिस्टेंस निकालना चाहें P और Q के दरमियान, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो हमने क्या करना है इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, यानी हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट with in coordinate geometry, that is whose coordinates are given। तो हमने क्या करना है, पहली बात जो है वह है ड्रा द परपेंडिकुलर PR on x axis। वी विल ड्रा PR परपेंडिकुलर on x axis, दिस परपेंडिकुलर। इसके बाद हम डालेंगे परपेंडिकुलर QS on the x axis। वी विल ड्रा फ्रॉम पॉइंट P, वी विल ड्रा perpendicular on x axis, that is PR, and from the other point Q we will draw another perpendicular, that is QS on the x axis। So from these two points we have to draw perpendiculars on the x axis। तो जिन पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस निकाली है इनसे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे x एक्सिस पर। और दूसरी बात जो है, अब हम इस पॉइंट P से गिराएंगे परपेंडिकुलर ऑन दी QS, that is this will meet the QS at point T, that is PT will be the perpendicular on QS। तो इस तरह आपको ये बात समझ आई होगी। नाउ आप क्या करना है, एज पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री x coordinate of point P is nothing but is the distance of point P from the y axis। So this point P, how much distant is point P from the y axis, that will be equal to the distance of point R from the x axis। So from this figure we can say that OR is S1 x1, distance of point R from from this y axis is equal to the x coordinate of this R, since PR is perpendicular on x axis from point P। इस तरह से जो पॉइंट, जितना पॉइंट P दूर होगा x एक्सिस y एक्सिस से, इतना पॉइंट और भी दूर होगा। तो इनकी जो दूरी है इसको हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट जो होगा और का वो होगा x1, दैट इज x1। सिमिलरली x कोऑर्डिनेट जो है s का वो होगा x2, दिस इज x2, बिकॉज जो पॉइंट Q और पॉइंट S हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी y एक्सिस, ये बराबर दूरी पर हैं y एक्सिस से। जैसे और P बराबर दूरी हैं x एक्सिस y एक्सिस से, इस तरह से जो इनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट्स वो सेम होंगे। इस तरह से Q एंड S जो है ये बराबर दूरी पर हैं y एक्सिस से। तो इस तरह से Q और S का जो y x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, दिस वे। नाउ जो और S है, फ्रॉम द फिगर वी नो दैट और S जो है दैट विल बी इक्वल टू OS माइनस OR। लेट अस हैव अ लुक ऑन द फिगर अगेन। चलो हम फिर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो और S है दिस मच डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम R to S, from R to S, that is equal to OS minus OR। So OS is x2 minus OR is x1, so ORS is x2 minus x1, so RS is x2 minus x1। So we have written
Over here r is equal to x2 minus x1. But we know that PT and RS are equal and parallel. From the figure you can see that we see that this RS is equal to PT. So whatever is the distance RS, the same distance is from P to T, that is RS. Now we have calculated RS as x2 minus x1, therefore PT is also x2 minus x1. Since PT and RS are equal, but RS is x2 minus x1 now, therefore PT is also x2 minus x1. Similarly, we can say that SQ. What is SQ? SQ is the distance of point Q from the x-axis, that will be the y coordinate of the point Q, and PR and ST are equal, and these are the distance of point P from the x-axis, that will be the y coordinate of the point P, that is y1. Now we know that from figure we can calculate that TQ is equal to SQ minus ST. Let's have a look on the figure in order to understand it clearly. Now we know that SQ is this distance, that is distance of point Q, from x-axis, that will be the y coordinate of point Q. And similarly, PR is the distance of point P from the x-axis, that will be the y1, that is y coordinate of the point P, that is y1. So this is y1, this distance is y2 over here, y2. Now we know that PR and ST are equal and parallel, so PR is equal to ST, so ST is also equal to y1. Now we can calculate the distance TQ is nothing but it is SQ minus QT. TQ is SQ minus ST, but ST is equal to y1, so TQ is equal to y2 minus y1. Now let's calculate it theoretically. Now SQ is y2 and PR is equal to ST, both are equal to y1. Now TQ is SQ minus ST, therefore TQ is equal to y2 minus y1. So this is the another distance between T and Q. Now using the Pythagoras theorem, we can calculate the distance PQ. Pythagoras theorem we will use in the right angular triangle PTQ. Now let's have a look on the triangle PTQ. Now from this triangle PTQ, we have PQ is the hypotenuse, PT is the base, and TQ is the altitude. So Pythagoras theorem says that hypotenuse square, that is PQ square, is equal to PT square plus TQ square. Now we will use Pythagoras theorem in this right angle triangle in order to find the distance between 2 points P and Q, that is PQ. Now PQ square
is equal to pt square plus qt square, that is hypotenuse is equal to base square plus altitude square. In right angle triangle PTQ we will use the Pythagoras theorem. Now PQ square is equal to PT over here is x2 minus x1, so we will write PT equal to x2 minus x1 whole square plus PQ is now equal to y2 minus y1 whole square. Only PQ will be equal to the positive square root, because distance between points is always positive. We will take the positive square root only, so PQ will be equal to positive square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So PQ is nothing but distance between 2 points P and Q. So distance between any 2 points P and Q will be equal, with given coordinates x1 and y1, x1 y1 and x2 y2, will be equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, square root of this. So this formula is known as the distance formula, because it gives the distance between 2 points with given coordinates x1 y1 x2 y2. So this formula we will use to find the distance between two pointers whose coordinates are given. This formula is known as distance formula.